Hey guys, welcome back to DIY Swag. This is Dia again, and today we are going to make this beautiful sa Rajasthani style door hanging in a very simple way out. So without further ado, let's get started. To make this, I have already prepared this cardboard and I cut it in a shape of turban man. Now for hanging also, I had taken a piece of cardboard and covered the sides with the masking tape. Now I am making the mustache of this turban man with the air dry clay, and I'll be making to give it a good texture. So like this we are going to make it with the help of any kind of air dried clay. So here I am making hands, mustache and the eyebrows of this turban man and the outlining of the turban. I'm giving it all with the clay. So like this, सिंपल तरीके से we can do it. This simple and beautiful door hanging in a very Rajasthani look is very easy to make, and it look like a very traditional kind of decor. And if you want to buy it, it'll cost you around 400 bucks in Amazon with the same styling. So like this, I'm giving it a hair-like texture with the help of this sculpting knife. मैंने इसको केक बेस पे बनाया है. आप चाहो तो कार्डबोर्ड पे भी बना सकते हो, बट अगर आप कार्डबोर्ड पे बना रहे हो तो मेक श्योर यू कवर द एजेस विद द मास्किंग टेप, और यू कैन कोट द एजेस विद एनी काइंड ऑफ टेक्सचर पेस्ट. Now like this, I'll be outlining the turban. आई होप आपको ये पसंद आएगा जिस वे मैं बना रही हूँ. मैंने कटिंग वगैरह नहीं दिखाया क्योंकि बिकॉज़ मैंने आपको पहले भी बताया था मैं ऑर्डर्स पे DIYs बनाती हूँ, तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक कटआउट पड़ा था. एंड कैनवसेस में ऑलरेडी कैनवस बोर्ड या फिर केक बेस या फिर कार्डबोर्ड के बना के रखती हूँ. बॉर्डर पे भी मैंने नाइफ से ऐसे टेक्सचरिंग दे दिया है. बाकी इट्स वेरी सिंपल, यू कैन सिंपली मेक इट, और एल्स यू कैन अवॉइड द क्ले पार्ट इफ यू आर मेकिंग इट ऑन द केक बेस बोर्ड. अब सब कुछ सेट होने के बाद आई एम गिविंग अ कोट ऑफ वाइट जेसो, होममेड जेसो इट इज. Now after it dries completely, now I'll be coloring it. Now it's all about playing with the colors. तो आपको जो कलर अच्छे लगते हैं, and you can make it different by using different colors, and playing with the colors. You can use combination of colors and make it colorful, because Rajasthan tradition is making all things colorful. Like this. ऐसे मैं
फेस मार्क करके इसका जो शर्ट है उस पर रेड कलर कर रही हूँ। डोंट फॉरगेट टू कवर द एजेस पार्ट, बिकॉज अगर आप एजेस का कलर नहीं करोगे, वह कलर से कवर नहीं करोगे तो वो अजीब लगेगा और अच्छा नहीं लगेगा आंखों को देखने में। तो लाइक दिस आप उसके एजेस को ज़रूर कलर करें, बिकॉज ये छोटी छोटी चीज़ हम भूल जाते हैं। नाउ द फेस पार्ट। Lastly, I'm using black color for brows and mustache. और इसके बाद इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। राजस्थान में आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रिंट्स मिलते हैं, तो यहाँ पर मैं इसका जो टर्बन है उसको, क्योंकि टर्बन मैन का टर्बन ही एक अच्छा देखने वाला होता है, तो मैं इसी को ही डेकोरेट करूँगी with mirrors and different colors of 3D. These 3D tubes I'm using. आप कोई भी डिज़ाइन बनाओ, आप किसी भी टाइप का राजस्थानी प्रिंट बनाओ, मैं तो सिंपल तरीके से फ्री हैंडली बनाए जा रही हूँ जो मुझे अच्छा लग रहा है। I'm using mirrors also here, और इनको भी फिर मैं आउटलाइन करूँगी 3D आउटलाइनर से। आपके पास मिरर्स नहीं हैं तो आप पेंट कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स के डॉट्स बना सकते हैं या बर्फी शेप बना सकते हैं। एनीथिंग, इट्स योर ओन क्रिएटिविटी। किसी भी तरीके से आप टर्बन को सुंदर बनाइए। देखिए मैंने इस यहाँ पर ग्लिटर यूज़ किया है, ग्लिटर ट्यूब्स भी यूज़ किया है। अब मैं उसी ग्लिटर ट्यूब से यहाँ पर एक बॉर्डर बना दूँगी। सिंपल तरीके से बनाया हुआ है, ना मैंने इसमें टेक्सचर पेस्ट यूज़ किया है, कार्डबोर्ड पे ही डायरेक्ट बनाया है। और इस पे मैं जो भी आपको लिखना है, पधारोसा लिखना है, मैंने एक पधारोसा का भी बनाया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लास्ट में उसका पिक्चर ऐड करूंगी। लेकिन इसको मेरे को डिफरेंटली बनाना था तो मैं इस पे लिख रही हूँ राम राम सा। आप कुछ भी लिखिए जो भी आपको राजस्थानी में लिखना हो, बट क्योंकि ये ट्रेडिशनल है, राजस्थानी थीम पर है, तो आप वही लिखिए जो राजस्थानी थीम पर जाता है, या सिंपली नमस्ते भी लिखेंगे तो चलेगा। एंड यूज इट एज अ वेलकम बोर्ड एट योर डोर। नाउ सम टिंट ऑफ गोल्डन आई एम यूजिंग, एक ग्रेसफुल इफेक्ट के लिए। इससे थोड़ा ग्लिटरिंग इफेक्ट आ जाएगा और थोड़ा सा मेटालिक गोल्ड गोल्ड सा लगेगा। थोड़ा सा मस्टैच पर एंड शर्ट पर थोड़ा इफेक्ट देंगे। I love playing with colors, so you can use your own creativity in this part. जो भी आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। Play with the colors. अब मैं इस जूट थ्रेड को इन होल्स में से पास करूँगी। ये आप कलर करने से पहले होल्स पंच कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में अगर आप करेंगे तो कलर थोड़ा सा हटेगा, फिर आपको दोबारा कलर करना पड़ेगा, तो पहले ही कर लीजिए। और इसमें मैंने कुछ मोती डाले हैं टू मेक इट मोर चार्मिंग। आप चाहे तो डालिए, चाहे नहीं भी डालें। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से बनाइए इसको। आप सिंपली 2 कार्डबोर्ड को जोड़कर भी बना सकते हो, इट विल बी स्ट्रॉन्ग इनफ। और अगर आप कार्डबोर्ड पे बना रहे हो तो एक कोट अगर आप टेक्सचर पेस्ट का दे दोगे तो इट विल लुक
रियली गुड। वो कार्डबोर्ड का लगेगा ही नहीं, वो ऐसे ही लगेगा जैसे आपने रेडीमेड लिया है एमडीएफ बोर्ड का या फिर केक बेस का बनाया हुआ लगेगा। मैंने इसको टांगने का प्रिपरेशन कर लिया है लाइक दिस। बैक साइड पे इस थ्रेड को अच्छे से टाई कर देंगे। दिस इज़ आवर टाइंग थ्रेड। अब सिंपली जो अदर साइड बचा है इसको मैं यहाँ पर पेस्ट करने वाली हूँ, या एक दूसरे तरीके का भी मैंने बनाया है एंड इट्स रेडी। वो भी मैं आपको अभी डिस्प्ले पे दिखा रही हूँ। इसको आप नीचे भी होल्स करके टांग सकते हो। एक स्टाइल ये हो गया एंड सेकेंड वन इज this wala. This way also you can hang it. Thank you guys for watching it and I hope you liked it. If you like it then please like, share, subscribe my channel.